निगेटिव थॉट्स आते थे वो भी ठीक हो गया, झगड़ा वगैरह घर पे करता था वो सारी चीजें भी सुधार हो गई। कितने दिनों का ये आपका ट्रीटमेंट चला प्रॉपर? 2-3 महीने में ही जो आप 9 इयर्स का आपका सफरिंग था वो 3 महीने में ही आपका इसमें सुधार। मुझे तो ये इलाज हो रहा, पहले क्यों नहीं मिले आप? एक दिन से परेशान चल रही थी, पहले क्यों नहीं मिले? और देखो करने वाला तो भगवान है, पर भगवान के थ्रू देखो डॉक्टर भी भगवान के रूप बताए तो भगवान ने भेजा, आपसे मिला दिया। Hello everyone, I am Dr. Ramesh Krishnan, consultant neurologist, and in this video I would like to share a story of a patient who came to my clinic who was struggling from his mental symptoms, and how early diagnosis and early care can change the life of this patient. This patient had a history of road traffic accident approx 18 years back. Following this stress, he was indulged in some addictions of alcohol, followed by mental symptoms in the form of delusions, illusions, perceptual abnormalities, having suspicious thoughts, restlessness, irritability, violent anger towards his family member. He came to my clinic 2 months back with these symptoms. His family member were totally disparate, totally disappointed with the symptoms, with the behavior of the patient. So the symptoms, actually this patient was having तो वही है डॉक्टर साहब। उनको क्या क्या दिक्कत थी जब पहली बार आए थे? पहली बार जब मैं आए थे उनको दिक्कत मतलब जैसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देना, और कुछ भी हम बोलते थे उसको नेगेटिव वे में लेता था, और चीज़ें नहीं मानता नहीं था हम लोग जो कुछ कहते थे, और आप लोगों पे शक करता था। हम लोग अगर कुछ बात भी कर रहे थे तो उसको ये लगता था कि मेरे बारे में बात हो रहा है, तो उसको शक होता था। और गुस्सा तो काफी करता था, मतलब कभी कभार सामान वगैरह भी तोड़ देता था। इतना वायलेंट और क्योंकि उसके जो चोट थी ना वो मतलब जो उसका एक्सीडेंट हुआ था नासिक में, उसकी वजह से उसको बहुत जगह दिखाया था, तो बाकी जो अदर डॉक्टर्स थे उन्होंने जो टैबलेट्स वगैरह उससे इतना आराम नहीं मिला। बस उन्होंने जो गोलियां वगैरह दी उससे बस थोड़ी देर टाइम के लिए शांत हो जाता था, गुस्सा नहीं करता था। उसके बाद से फिर वही उसका रिएक्शन होता था। तो फिर उसके बाद हमने बहुत जगह दिखाया, नोएडा भी दिखाया, तो वहाँ की भी मतलब इतना असर नहीं हुआ उसको गोली लेते थे तो सुस्ती आ जाती थी, और जैसे ही फिर वो गोली का इफेक्ट खत्म होता था तो वो फिर से उसी जगह से वायलेंट आउटबर्स्ट करना, झगड़ा करना। आपकी दवा से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया तो उससे काफी मतलब धीरे धीरे काफी सुधार हुआ। 70% अब तो 80% तक उसका हो गया है कि वो हम लोग बोलते हैं जो चीजें मानता भी है, सुनता भी है, जो इतना भी गुस्सा नहीं करता। अगर हम कुछ बोलते भी हैं तो मान लेता है, और नींद भी अच्छे से आती है। पहले उसको 2-3 घंटे सोता और फिर उठ जाता, अभी 8-9 घंटे नींद लेता है। नींद भी अच्छे से ले रहा है, जो इतने निगेटिव थॉट्स आते थे वो भी ठीक हो गया, झगड़ा वगैरह घर पे करता था वो सारी चीजें भी सुधार हो गई। कितने दिनों का ये आपका ट्रीटमेंट चला प्रॉपर? 2-3 महीने में ही जो आप 9 इयर्स का आपका सफरिंग था वो 3 महीने में ही आपका इसमें सुधार। मुझे तो ये इलाज हो रहा, पहले क्यों नहीं मिले आप? Which is someone is against him. These were the symptoms that his family member said to me. He was having thought disorders, that is loosening of his thoughts, some negative symptoms of suicidal tendencies, suspicious behavior towards his family member, talking to self, social withdrawal, irritability, anger, loss of insights. If someone tried to make him understand about his symptoms, about his mental instability,
he would respond in a violent way. And this was totally devastating for the family member who was suffering, who was frequently interacting with the person, with the patient. The possible triggers could be road traffic accidents, which led to the stress to the patient, which led to the biochemical abnormalities and the psychotic symptoms. So, early recognition of the symptoms will lead to timely treatment, will lead to compassionate care, and a better recovery could be possible. So, if someone is suffering in your society with these symptoms and it is bothering you, bothering to your family members, please consult to a neurologist at the earliest, because early consultations will have a positive outcomes, will have a positive effect to his mental symptoms, to the economic burden, and to the mental symptoms, to the mental stability of the society, and to the family members who frequently encountered, who frequently interact with the patients or the persons who suffer from. You may ask why these symptoms occur. A hypothesis which could explain the symptoms are the biochemical abnormalities which occur in these patients. Dopaminergic dysregulations, because deficiency of dopamine can lead to the positive thought symptoms that my patient could suffer from. Glutamate imbalance, it interacts with the receptors present over the neurons called NMDA receptors, which could be the other possibilities. A stress after a road traffic accident leading to biochemical abnormalities, and the neuroinflammations could be the contributing factors. So these are the contributing factors which can lead to the mental instability in my patient. Dopaminergic dysregulations, NMDA receptor dysfunctions, a stress after the road traffic accident leading to neurochemical imbalance, and the neuroinflammations. So the investigation that I ordered in my patients was the routine test, which is most commonly ordered by treating doctors: CBC, RFT, LFT, electrolytes, vitamin B12, folates. I ordered for it. Thyroid I also did, but it was normal. MRI brain to look for some structural changes if the patient was suffering for 10 years with his symptoms. Ordering imaging of the brain is utmost important. I did that. It was normal. I also ordered for EEG because sometimes a seizure long standing seizures could lead to the mental instability and the psychotic symptoms. It was also normal. Urine routine, blood sugars, all were normal. So these all investigation that I did, my patient was almost normal. So it can happen if a patient suffers from mental symptoms, because most of the mental symptoms are because of the biochemical abnormalities, because of stress, and these neuroinflammations can contribute to it. After being diagnosed, don't be afraid of this pharmacotherapy, because these are the long-term treatment for it. Regular follow with the proper occupational therapy, proper environment could have a positive outcomes, and this you can be free from the medications at the earliest. अपने अनुसार मेडिसिन चलाते हैं, लेकिन ये सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं, वही अवेयर आपको रहना है कि ऐसी मेडिसिन है कि इसके अगर लॉन्ग टर्म चलेगा तो सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे। तो इसलिए अगर पेशेंट्स खुद से सिम्टम्स को ध्यान दे, खुद से इस पे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा, तो मेडिसिन को हम इजीली हम बंद कर सकते हैं।
तो जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट एक नई समस्या उत्पन्न कर सकती है, बाद में वो खत्म हो वो तो जाएगी। देखो लिमिट से ज्यादा खाओगे तो वो तो फिर साइड इफेक्ट हाँ, तो वही चीज लॉन्ग टर्म्स नहीं लेनी है, और लॉन्ग टर्म्स तभी प्रिवेंट आपका होएगा जब तक कि आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, आप खुद से ही फैमिली में ऐसा इन्वॉल्वमेंट अच्छा क्रिएट नहीं। करो। देखो आप तो अब सही सलाह दे रहे होते डॉक्टर है, नहीं तो आपको क्या जा रहा है। हाँ। वो तो लंबे टाइम तक चला हाँ, मैं तो आप मेरे पास जितना आओगे हमें उससे यहाँ तो आप भी बोलोगे हाँ। इतने दिन में आराम हो जाएगा, हम ज्यादा टाइम नहीं चलाएंगे। हाँ। नहीं तुमको तो अपना फीस लेना है। हाँ, और तो हम उतना चलाते रहेंगे। चलते नहीं, आपने जो रहेंगे। बोला सही बोला है, सत्य बोला है, बोले कि ज्यादा टाइम हम नहीं चलाते हैं। अच्छा। जब आराम ही 3-4 महीने हो रहा है एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, उसके लिए फिर से डॉक्टर के पास विजिट करते रहोगे, तो ये एक विस्कस साइकिल फिर शुरू हो जाएगी आपके लिए। तो और अभी आपके बेटी की मैरिज भी होने वाली है, ये सारी चीजें जो निगेटिव थॉट्स काफी इंप्रूव मैं हो तो गए। बोला शादी नहीं करूंगा मैं। हाँ, अच्छा, मैं नहीं अच्छा। करूंगा शादी। अच्छा, अच्छा। हाँ, थोड़ा छोटा बेटा इसी कर लेना, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, तो अब वो मान गया है और मान उसकी गया। मैरिज भी होने वाली है। हाँ। So the message that at the last that I want to give through this video is that if you or your family member or someone in this society is suffering from these mental disorders, please do consult to a neurologist or a doctor at the earliest, because early consultations will have a positive outcomes to your family members, to the person who is suffering from, and it can have a positive effects, positive environment in your society. Economical burden which you or your family member or the society is suffering from can be lessened. Thank you all for watching my